Hello dear students, today we have one more problem from IIT JEE 2020. 7 जनवरी का एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों. इन दिस क्वेश्चन इट इज़ सेड दैट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड द मैट्रिक्स दिस इज गिवन ए मैट्रिक्स, देन यू नीड टू फाइंड द ए रेज पावर 31. तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स में, मैट्रिसेस के इस तरह के प्रॉब्लम्स में मैं जनरली बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर मैट्रिक्स ए दिया गया है, ट्राई टू फाइंड ए स्क्वायर. इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जनरली ए स्क्वायर सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, और अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ए रेज पावर 4 या ए रेज पावर 8 ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं. बोल रहा है अल्फ़ा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. सो अगर ऐसा है तो अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0. दिस वी विल यूज़ इन आवर फर्दर कैलकुलेशन. सो लेट अस फाइंड आउट ए स्क्वायर. सो बच्चों ए स्क्वायर क्या होगा? दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स. सो 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 दो बार आएगा, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 3 and this matrix will be written 2 times in multiplication. So you will be getting this into 1 1 1 1 alpha alpha square 1 alpha square alpha raised power 4. Now मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई होप यू पीपल नो. अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस. अगर बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आता है सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट सो दैट हम इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मल्टीप्लिकेशन के लिए रो 1 एंड कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे दिस एलिमेंट A11 मिल जाता है. सो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1. सो यू विल बी गेटिंग 1 प्लस 1 प्लस 1 3. नाउ रो 1 कॉलम 2 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर. सो यू विल बी गेटिंग 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर. नाउ व्हाट वुड बी थर्ड एलिमेंट? 1 plus alpha 1 into alpha square 1 into alpha raised power 4, that is alpha raised power 4. So you will be getting 1 plus alpha square plus alpha raised power 4. Now talk about this element. This element will be obtained by row 2 column 1. So 1 alpha alpha square. So 1 plus alpha square. This element will be 1 plus alpha square plus alpha raised power 4. Now next element will be 1 plus alpha cube plus alpha raised power 6. Now this element will be 1 plus alpha square plus alpha raised power 4. Again 1 plus alpha cube plus alpha raised power 6. Third element this 1 plus alpha की power 4 plus alpha raised power 8. This. So this you are getting. Now what are the values of these expressions? How to find these expressions? So बच्चों इन expressions को find out करने के लिए what can you do? This alpha square plus alpha plus 1 equal to 0 is given. If you will multiply both sides by alpha, so what you will be getting? You will be getting alpha cube plus alpha square plus alpha is equal to 0. Now बच्चों what can you say? This is alpha cube plus alpha square plus alpha is minus 1. So you can put here minus 1 is equal to 0. So from here you can say alpha cube is 1. So let's put alpha cube 1 in this a square and try to find a square. So now
the matrix A square will become 1 upon 3. 1 plus alpha square is already 0, so I can put 0 here. This is actually 1 plus alpha square plus alpha raised to power 4 can be written as alpha cube into alpha. Alpha cube is 1, so it will be alpha only. This is 0. This is again 1 plus alpha square plus alpha, because alpha raised to power 4 is alpha cube into alpha. So alpha cube is 1, so you will be getting only alpha. Similarly here also it would become 1 plus alpha cube is 1. Alpha raised to power 6 will also be 1. So here also 1 plus alpha square plus alpha, 1 plus 1 plus 1, 1 plus alpha plus, what is this, alpha raised to power 8. You can see alpha raised to power 8 is alpha raised to power 6 into alpha square, and alpha raised to power 6 will be 1, so it will be alpha square. So here alpha square. Again there are terms like 1 plus alpha square. So 3, 0, this is also 0, 0, this is also 0, 3, 0, 3, 0. So what are you getting? You are getting a matrix like identity but not identity matrix. No problem. I said in the beginning of the question, generally we get identity matrix. This 1 upon 3 I'll put inside, so this will not be here, this will go here, it will be 1 0 0 0 0 1 0 1 0. So we are not getting identity matrix. So if a square is not identity, so let's try to find a raised to power 4. Now let us try to find a raised to power 4. What will it be? It will be 1 0 0 0 0 1 0 1 0 into 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Why? Because a raised to power 4 is a square into a square, and a square is this, because we were calculating a square only. So a square is this, so I have put it here. So let's find out a raised to power 4. What is this coming? This is 1 into 1, 0 into 0 into 0, so 1 only. Similarly row 1 column 2 again 0, row 1 column 3 again 0, row 2 column 1 0, row 2 column 2, 0 into 0, 0 into 0, 1 into 1, 1, 0 0 0 0 0 0, row 3 column 2 0 0 0, row 3 column 3 0 1 0, so 1. So now we have got identity matrix. A raised to power 4 is coming out to be identity. Then you can find a raised to power 8, a raised to power 12, a raised to power 16, and so on. So let us find out a raised to power 31, because a raised to power 31 is asked. So a raised to power 31 can be written as a raised to power 28 into a cube. So a raised to power 28 will be, since a raised to power 4 is identity, so a raised to power 28 will also be identity matrix of order 3, I3 you can say. So here you will be getting, why identity? Because you can try आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा. सो ए रेज़ पावर 8 विल ऑल्सो बी आइडेंटिटी, ए रेज़ पावर 12 will also be identity, a raised power 16 will also be identity, similarly a raised power 28 will also be identity. So this is identity matrix I3 into a cube, and अगर identity matrix को किसी matrix से multiply करते हैं तो I will be getting that matrix only, so a cube. So now we can watch our options. Our options are also given in the form of a cube, a square, I3, a. So which option is correct? Option 1 is correct.
थैंक यू।